Assalamu alaikum dear students. In the previous class we have actually discussed about the equation of a straight line which is passing through a given point and parallel to a given vector. So if we have a given line and that given line passes through a given point with its position vector or coordinates and is parallel to a given vector v, then it is equation we have deduced in the previous class in vector form, that's equal to r vector is equal to a vector plus t times v vector. This is the vector equation of that line which is passing through a point and parallel to a given vector, and its Cartesian form will become x minus x1 divided by a is equal to y minus y1 divided by b is equal to z minus z1 divided by c. So this is the vector equation of that line passing through a point and parallel to a given vector, and this is the Cartesian equation of that line. So here r vector is the position vector of any point lying on the line, a is the position vector of given point through which the line passes, t is a parameter, a real number, and v is that vector which is parallel to the line. And here in case of Cartesian form, x, y and z are the coordinates of any point, means an unknown point lying on this line. This x1, y1, z1, they are the coordinates of the given point through which the line passes, and a, b, c are the ordered three tuple of a, b, c are the direction ratios of that vector which is parallel to the line. Now that was all about the previous topic. Now we are going to discuss another topic regarding this line, and that must be equation of a line passing through two given points. उस line की equation क्या होगी? That is passing through two given points. So पहली फॉर्म में हमारे पास एक पॉइंट था और एक वेक्टर था जो लाइन के पैरेलल था, लेकिन in that case we have two given points through which the line passes and we have to deduce, we have to compute its equation. इसकी equation क्या बनेगी? So again we are taking the three-dimensional Cartesian coordinate axis like this. This is the origin, this is positive x-axis ox, positive y-axis oy, and positive z-axis oz. Suppose we have a line like this and we need to calculate its equation, but it is given that it is passing through two given points, suppose A and B. It is given that this line is passing through two given points, and let that two given points be A and B. A is a point in space, so it must has its position vector, and let that position vector be small a vector. And B is again a point in space, it must again has its position vector, and let that position vector be denoted by small b vector, right? But small a vector is the position vector of point A. The position vector of any point is with respect to the origin. So जो हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट ओ, वो जो डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट वही होगा स्मॉल ए वेक्टर, पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए. सिमिलरली अगर हम डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट बी, जो ये ओ बी वेक्टर बनेगा यही बनेगा पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी, और पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट बी दैट वी हैव टेकन एज स्मॉल बी वेक्टर. तो यहां पे मेंशन कर देंगे, लेट अस कंसीडर अ लाइन, let us consider a line passing through two given points. Let us consider a line passing through two given points, जो दो given points में से पास हो रही है, A and B, with their position vectors as small a vector and small b vector respectively. तो हमने दो पॉइंट्स लिए, दो गिवन पॉइंट्स लिए जिनमें से ये लाइन पास हो रही है. एक है पॉइंट ए, उसका पोजीशन वेक्टर लिया स्मॉल ए वेक्टर, और दूसरा है पॉइंट बी जिसका पोजीशन वेक्टर हमने लिया स्मॉल बी वेक्टर, राइट? नाउ अगर हम फिर से जैसे हमने एक पॉइंट लिया था in case of equation which was passing through a point and parallel to a given vector, तो सपोज हम एक पॉइंट ले रहे हैं P in space, और इस पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर ले रहे हैं सपोज स्मॉल r vector, an unknown position vector, and we have taken that small r vector. So let point P with position vector small r
let point P with position vector small r be any point. ये कोई भी पॉइंट है, अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं कहां पे है, be any point, ये कोई भी पॉइंट है. तो सपोज आपने एक पॉइंट लिया है P विथ पोजीशन वेक्टर स्मॉल r. आपके पास ऑलरेडी दो पॉइंट्स हैं बट दैट आर नोन टू नोन पॉइंट्स, टू गिवन पॉइंट्स, पॉइंट A एंड पॉइंट B with their respective position vectors as small a vector and small b vector, but we have chosen another point P with position vector small r. लेकिन अभी हमें नहीं पता कि ये पॉइंट P जो है कहां पे है. अब हम ले लेंगे सपोज ये पॉइंट P जो है, ये पॉइंट P जो है ये इसी लाइन पे लाई कर रहा है जिसपे A और B ऑलरेडी लाई कर रहे हैं. तो तब क्या होगा, देन पॉइंट P लाइज ऑन द लाइन AB, तब ये लाइन AB पे लाई करेगा व्हेन AB वेक्टर एंड दिस AP वेक्टर, अगर AB वेक्टर और AP वेक्टर का सपोर्ट जो है वो सेम है, यानी दे आर कोलिनियर वेक्टर्स. सो अगर AB वेक्टर और AP वेक्टर कोलिनियर वेक्टर्स हैं तभी जो पॉइंट P है वो लाई करेगा ऑन द लाइन जिस लाइन पे ऑलरेडी दो पॉइंट्स A और B लाई कर रहे हैं, राइट. तो अब यहां पे ले रहे हैं देन द पॉइंट P, तब ये पॉइंट P जो होगा लाइज ऑन द लाइन AB, लाइज ऑन AB, ये तब AB पे लाई करेगा इफ एंड ओनली इफ जब ये दोनों वेक्टर्स जो हैं कोलिनियर होंगे, यानी AB वेक्टर और AP वेक्टर कोलिनियर होंगे. तो चूंकि पॉइंट P का पोजीशन वेक्टर स्मॉल r है, इसलिए अगर हम ओरिजिन से एक लाइन ड्रा करेंगे, डायरेक्टेड लाइन, तो वो रिप्रेजेंट करेगा स्मॉल r वेक्टर बिकॉज दैट विल बी द पोजीशन वेक्टर. OP वेक्टर मस्ट बी द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट P एंड वी हैव टेकन दैट स्मॉल r वेक्टर. अब हम ले रहे हैं पॉइंट P. तो पॉइंट P अगर इसी लाइन पे लाई करेगा तो ये AB वेक्टर और पूरा AP वेक्टर जो है वो कोलिनियर होंगे, उनके सपोर्ट सेम होंगे. जब इनके सपोर्ट सेम होंगे तो सिर्फ डिफरेंस किस में होगा, A और AB वेक्टर जो है वो A से लेके B तक है, लेकिन AP वेक्टर जो है वो A से लेके P तक है. सो AP वेक्टर मस्ट बी द स्केलर मल्टीपल ऑफ AB वेक्टर, क्योंकि AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड AB वेक्टर से ज्यादा है. तो मैग्नीट्यूड जब AP वेक्टर का मैग्नीट्यूड AB वेक्टर से ज्यादा है तो वी विल मल्टीपल AB वेक्टर बाय सम स्केलर, बाय सम पॉजिटिव स्केलर लैम्डा, राइट. So therefore, be any vector, then the point P lies on AB if and only if AP vector is equal to this AP vector. हाँ जी गला, तो पॉइंट P इस लाइन पे लाई करेगा अगर AB वेक्टर और AP वेक्टर आपस में कोलिनियर होंगे. तो जब दो वेक्टर्स कोलिनियर होते हैं, यानी अगर हम सपोर्ट सेम की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सो AB वेक्टर और AP वेक्टर के सपोर्ट जो है वो सेम है, तो सिर्फ डिफरेंस किस में है, मैग्नीट्यूड में. So AP must be the magnitude of AP must be greater than the magnitude of AB. That is why AP vector. So if and only if AP vector is equal to T times AB vector, where T is some scalar. तो वहां पे लैम्डा लेते थे लेकिन यहाँ पे T ले रहे हैं. So where T is a real number, T एक real number है called a scalar जिसका नाम यहाँ पे है called a parameter जिसका नाम यहाँ पे है parameter in three-dimensional geometry in order to find the equations of Linus, and here we called it by a special name and that's called a parameter. सो अगर AB वेक्टर और AP वेक्टर कोलिनियर है, एक ही सेम सपोर्ट पे लाई कर रहे हैं, सिर्फ डिफरेंस किसमें है, मैग्नीट्यूड में. सो ऑब्वियसली AP वेक्टर मस्ट बी सम स्केलर टाइम्स AB वेक्टर and that is AP vector is equal to that scalar we have denoted by T, so T times AB vector. Now we are keeping this equation as equation number first. And in this equation number first we need two quantities, first AP vector and AB vector. और हम इन AB वेक्टर और AP वेक्टर को फिगर में से कैलकुलेट करेंगे. तो therefore from figure we have what we have from the figure. अगर ये बड़ा वाला ट्रायंगल हम कंसिडर कर लेंगे तो OA वेक्टर
plus AP vector must be equal to OP vector because by triangle law, because OA vector and AP vector are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order, then their sum or resultant must be represented by the third side taken in opposite order. So that is why OA vector plus AP vector must be equal to OP vector. So from figure we have OA vector plus AP vector must be equal to OP vector. Why? Because by the familiar law of addition of vectors, and that's triangle law. So OA vector plus AP vector is equal to OP vector because by triangle law of addition of vectors. Further this can be written as, which implies AP vector must be then equal to, तो AP vector किसके बराबर आएगा? OP vector आ रहा है जिसमें OP vector ही है, ये यहाँ पे माइनस OA प्लस OA वेक्टर है तो उस साइड में बनेगा माइनस OA वेक्टर, सो माइनस OA वेक्टर which further can be written as AP vector is then equal to, what is OP vector? OP vector is actually the position vector of point P and that is small r vector. So small r vector minus OA vector. OA vector is actually the position vector of point A and that's small a vector. So AP vector must be equal to r vector minus A vector. In the similar fashion we are going to calculate another vector and that's AB also. तो इस AB वेक्टर को हम कहां से कैलकुलेट करेंगे? अब हम ये छोटा वाला ट्रायंगल जो है OAB ये ले लेंगे, तो इन दैट ट्रायंगल OA वेक्टर प्लस AB वेक्टर मस्ट बी इक्वल टू OB वेक्टर. व्हाई? Because OA vector and AB vector are two vectors represented by two sides of a triangle taken in same order, then their sum must be represented by the third side taken in opposite order, again by triangle law. So also OA vector plus AB vector must be equal to OB vector. Why? Because by the same reason, that's triangle law, because by triangle law. So implies from here we are going to calculate AB vector. So AB vector must be then equal to, तो AB vector फिर किसके बराबर आएगा? Yes, OB vector. So OB vector ये यहाँ पे प्लस OA है तो उस साइड में माइनस OA बनेगा, माइनस OA vector. So implies AB vector फिर कैलकुलेट हो रहा है किसके बराबर? So AB vector is equal to OB vector. What is OB? The position vector of point B and that is small b vector. Minus OA vector. OA vector is the position vector of point A and that is small a vector. So means AB vector is then equal to B vector minus A vector. AP vector is equal to R vector minus A vector and AB vector is equal to B vector minus A vector. We are putting the values of AP vector and AB vector in equation first. So therefore from equation first we have, what we have from first? Therefore from equation first we have, yes Jigra, what we have from the first? AP vector. So AP vector is equal to T times AB vector, which further implies that, yes, put the value of AP vector, that is R vector minus A vector. So R vector minus A vector is equal to T times AB is equal to T times, put the value of AB vector, that is B vector minus, so B vector minus A vector. Implies this can be further written as R vector को यहीं पर रख दो, ये माइनस A वेक्टर है तो उस साइड में प्लस A वेक्टर बनेगा and that's equal to A vector plus T times B vector minus A vector. This would be the equation of that line in a vector form which is passing through two given points with their respective position vectors as A vector and B vector. This is the required equation of line. This is the required equation of line in vector form. ये होगी जिगरा required equation of line, लेकिन किस फॉर्म में? वेक्टर फॉर्म में. तो क्या होगी उस लाइन की इक्वेशन जो दो पॉइंट्स में से पास हो रही है इन वेक्टर फॉर्म? क्या होती है? R vector is equal to A vector plus T times B vector minus A vector, where R vector is the position vector of any point on the line, any unknown point on the line. A vector is the position vector of first point through which the line passes. T is a scalar and B vector is the position vector of second point through which the line passes, and A vector is again the position vector of first point through which the line passes. So this would be the
required vector equation of a line which is passing through two given